Good afternoon, each and everyone. Thank you, each and everyone who have been liking our videos, and thank you for all the subscribers who have subscribed our YouTube channel. Now, in my last lecture, I have discussed about partnership and the accounting methods to do so. And I promised you that in the next lecture, I will give you a detailed explanation about the accounting methods. We did discuss about the names of the accounting methods. First one, fluctuating capital method, and the next one was fixed capital method. Today we are going to discuss in detail about the fluctuating capital method. I'm again saying that fluctuating capital method. Now, fluctuating capital method, the name itself gives you an idea about what is fluctuating capital method. In this methodology, the capital of the partners will not remain constant. Capital will increase and capital will decrease. Partners don't have a certain ideology of maintaining separate accounts. पार्टनर्स नहीं चाहते कि वो अपने लिए अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करें. फर्म से, बिजनेस से उनको जो भी प्रॉफिट या जो भी बेनिफिट मिलता है वो चाहते हैं, दे एक्सपेक्ट कि वो उनके कैपिटल में प्लस हो जाए. और अगर उनका कोई भी लॉस होता है, पार्टनर्स, इफ द पार्टनर्स एक्चुअली हैव टू पे आउट एनी एक्सपेंसेस और एनी लॉसेस, then the partners expect, पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके कैपिटल में से माइनस कर दिया जाए. अब यहां पर पार्टनर्स सीम्स टू बी अ बिट लेथार्जिक, थोड़े लेजी जैसे लगते हैं, क्योंकि वो सब कुछ चाहते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट में ही होना चाहिए. प्लस हो तो कैपिटल अकाउंट में हो, माइनस हो तो कैपिटल अकाउंट में हो. नाउ इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, and if I need to explain the entire format, so just to make it easy for each one of you, I have written down the entire format for you. This is the entire format of fluctuating capital method. Basically, you can see the format, that is date, particulars A, B, date, particulars A, B. If I give you an idea about this account, then this account is nothing but it is a ledger. It is a ledger. I hope ledger हम सबको पता है. Journal, उसके बाद ledger. This entire format is a ledger of what? It is a ledger of partners capital account. Now this partners capital account has a certain methodology. अभी तक 11th standard में whatever final accounts you have studied, you did study about capital account, but only of a sole proprietor. एक सिंगल ओनर था. अब उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में शो करते थे, प्लस माइनस करके फाइनल कैपिटल फाइंड आउट करते थे. बट यहां पर चीजें इज ऑल अबाउट, यहां पर एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप. तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दो पार्टनर्स के बारे में. यहां पर हमारा डिस्कशन दो पार्टनर्स के बीच में होने वाला है, ए एंड बी. इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, it's very clear, it is the debit side. If I talk about the right hand side, it is very evident, it is the credit side. I am just following the same procedure of ledger posting. जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को लेजर आ जाता है, शायद उनको मेरा ये आइडिया और आसानी से समझ में आ सकता है. बट स्टिल मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूं, प्लीज. नाउ सबसे पहले हम सबको पता है कैपिटल अकाउंट, और इफ आई यूज द वर्ड कैपिटल, तो हम सबको पता है
capital has a credit balance. 11th में we all have studied. Capital always has a credit balance because capital is the amount of money invested by the owner into the business. Business के लिए capital is always a liability because owner is the giver and capital is a personal account. I have told you about it in my last video. Now, जो भी कैपिटल दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी. मैं दो पार्टनर्स का एग्जांपल लेके चला हूं. ए एंड बी हैज अ क्रेडिट बैलेंस. In case if you want to go in details, then I would even help you by giving you numerical figures. Let's take numerical figures for you. If I say the opening balance of A and B is 10 lakh and B has a balance of 8 lakh. So this is the actual capital introduced by A and B into the business. Now, if I talk about the next entry, cash and bank. Now, before going one by one over here, I would rather tell you one thing for sure. Partners, the other capital, if the capital of the partners increases, other partners का capital increase हो रहा है, तो partners always, हमेशा, partners will credit. I'm still saying that partners will credit their capital accounts. The capital accounts will always be credit. Other partners को फायदा हो रहा है, other partners का capital increase हो रहा है, तो partners अपना capital account हमेशा credit करते हैं. If I say कि पहले से 10 लाख और 8 लाख A and B ने इंट्रोड्यूस कर दिया था बिजनेस में. In the business time, बिजनेस को और फंड्स की जरूरत पड़ी. Business was in shortage of funds. And at that point of time, A और B दोनों ने बिजनेस को एडिशनल कैपिटल दिया, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल इन्वेस्ट किया. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्टली A का कैपिटल इंक्रीज होने वाला है और B का कैपिटल भी इंक्रीज होने वाला है. लेट्स टेक वन मोर न्यूमेरिकल फिगर. इफ आई से द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय A and B is 2 lakh and 1 lakh into the business. So now it is very easy to say कि A के कैपिटल में बैलेंस है 12 लाख while B के कैपिटल में बैलेंस है 9 लाख. I hope this topic must be clear. Now let us talk about interest on capital. Now interest on capital is something जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पार्टनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा. अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है तो इनडायरेक्टली आई कैन से दैट इट इज अ बेनिफिट फॉर देम. उनका फायदा है. और जहां पार्टनर्स का फायदा है, जहां पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जहां पार्टनर्स को लग रहा है कि इससे हमारी कैपिटल में इंक्रीज आ रही है, आई एम स्टिल सेइंग दैट कैपिटल में इंक्रीज आ रही है, पार्टनर्स वो सारे ट्रांजैक्शंस तो हमेशा अपने कैपिटल अकाउंट में, हमेशा अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बेनिफिट, इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेट्स टेक वन मोर न्यूमेरिकल फिगर. इफ आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय बोथ द पार्टनर्स, हाइपोथेटिकली हम इमेजिन कर सकते हैं टू भी न्यूमेरिकल एग्जांपल 20,000 and 10,000. So this is something कि A and B का कैपिटल इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है. आई कैन सी दैट कि उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस प्लस होते जा रहे हैं. इन द नेक्स्ट टॉपिक, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन. नाउ these 4 things are interrelated actually. If I say कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन इज समथिंग जो पार्टनर्स एक्सपेक्ट करते हैं. अगर A
बिजनेस तो और टाइम दे रहा है, if he is completely devoted towards the business, all his time is completely into the business, he would demand salary. And if partnership deed has mentioned about it, I'm still saying that partnership deed, the written agreement में अगर ये चीजें मेंशन्ड है तो ए तो सैलरी मिल सकती है, बी तो बोनस मिल सकता है, ए एंड बी तो कमीशन मिल सकता है, एंड अगर दोनों में से किसी ने भी बिजनेस को एक्स्ट्रा सर्विसेज दी हैं, देन दे कैन एक्सपेक्ट कि उनको रेम्युनरेशन भी मिल सकता है. नाउ इफ आई से कि ए इज एक्सपेक्टिंग कि उसे मंथली सैलरी जो मिलेगी दैट वुड बी 3,000 rupees. The monthly salary which A is expected to receive from the business is 3,000 per month, while B is expecting 5,000 rupees per month. I'm still saying it, per month. हर महीने उनकी expectation है. A is expecting 3,000 rupees per month. So I would rather say that the salary received by A would be 3,000 into 12. 3,000 into 12 months, that would be 36,000. And B is expecting a salary rupees 5,000 per month. So that would be 5,000 into 12 months, that would be 60,000. Bonus. Bonus word हम सबने सुना है. At the same time, even partners can expect कि बिजनेस उनको दिवाली पे या इन एनी टूर्स जब बिजनेस ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए तो शायद दे कैन रिसीव बोनस फ्रॉम द बिजनेस. बोनस इज समथिंग विच विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी को ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है, कैपिटल इंक्रीज होता है जब उनको बिजनेस बोनस देती है. इफ आई से द बोनस विल बी गिवन इक्वली, then it would be 20,000. I'm just taking numerical examples so that you can understand it more clearly. Now, at the same time, commission. Commission is a word is actually used for sales. Salesman के point of view से हम हमेशा commission को actually समझते हैं. Commission is something which both the partners can expect और a single partner can expect कि कमीशन मिलेगा. If I say कि A तो कमीशन मिलना चाहिए तो B भी शायद कमीशन मान सकता है, but A is actually the one जो obviously बिजनेस में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है that he can demand for commission, but the business is providing commission to both the partners. Let's take कि दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिलता है बिजनेस से, दोनों पार्टनर्स के लिए वापस से फायदा है. Let's take examples. 5,000. Now, with this, I'm actually talking about all such things which are benefits for the partners. सबसे पहले आप तो अपने आप को पार्टनर समझना है कि आप सब पार्टनर्स हो, और शायद अगर आपने अपने आप को पार्टनर समझ लिया है अभी तक तो ये टॉपिक भी अभी तक समझ में आ गया होगा. You might have been cleared with all such transactions. Partners के perspective से अगर मैं अपने आप को पार्टनर समझता हूँ, if I consider myself as a partner, then all such things are benefits for me. With all such things, my capital increases, और if my capital increases, then capital का original balance होता है credit, और अगर वो और increase हो रहा है तो मैं उसे और credit करता हूँ जो मैंने अभी तक same वही किया है. Let's go further. Remuneration. Now, remuneration is a word which is used in terms of giving services, extra services, managerial abilities. If A and B both have specialized managerial abilities and partnership deed, written agreement has said that they can receive remuneration for their services, then they will receive remuneration for their services. Like if I say 9,000. Now these details can show you that कहीं ना कहीं पार्टनर्स के लिए ये सारा बेनिफिट था, सारा बेनिफिट.
Now let's switch to the debit side. The last transaction will be explained later, but let's go with the debit side first. Now, to balance brought down, debit balance. Now I would suggest you that considering the debit balance should not be there. Don't consider that in your examination or in your paper, the examiner will give you capital debit balance, because we all know that capital always has a credit balance. So even if you don't consider this point of balance, of the opening balance, this is the opening debit balance, even if you don't consider it, it will not be a problem for you. But the other part is more important. अभी तक whatever you have studied in this entire credit side, आपने हमेशा नोटिस किया कि इससे आपका कैपिटल इंक्रीज ही हो रहा था, हमेशा आपका कैपिटल सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हुआ है. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि किससे हमारा कैपिटल कम हो सकता है. अगर ए ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया फॉर हिज पर्सनल यूज, इफ ए इज एक्चुअली withdrawing money from the business for his personal use, तो indirectly I can say that कि उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा. If I take an example, अगर उसका कैपिटल था 10 लाख और अगर वो विड्रॉ करता है 5 लाख या 2 लाख, तो 10 लाख का कैपिटल था और 2 लाख की उसने ड्रॉइंग कर ली, तो उसका कैपिटल भी ड्रॉप हो जाएगा. इट मींस कैपिटल पे रिवर्स इफेक्ट आ रहा है, कैपिटल पे रिवर्स इंपैक्ट आ रहा है. और जब कैपिटल पे रिवर्स इंपैक्ट आता है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है. बट अब हम क्या करेंगे, उसे डेबिट. कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, हम उसे डेबिट करेंगे जस्ट बिकॉज कैपिटल पे रिवर्स इंपैक्ट आ रहा है. दैट इज इफ आई लेट्स टेक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स फॉर द सेम. 2 drawings 2 lakh. At the same time B does the same 1 lakh. B ने भी बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया और रुपीज 1 लाख. सो बोथ द पार्टनर्स हैव विड्रॉन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस, जिसकी वजह से उनका कैपिटल बिजनेस में कम हो जाता है बाय 2 लाख एंड बाय 1 लाख. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल देते हैं, दे एक्सपेक्ट कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड दैट इज अ बेनिफिट फॉर देम. बट नाउ अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा मांग रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस भी उनसे एक्सपेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अ बिजनेस इज आस्किंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना पड़ता है बिजनेस को, देन दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स. उससे पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है क्योंकि वो उनके लिए खर्चा है. इन सिंपल वर्ड्स इट इज एन एक्सपेंस, तो उनका कैपिटल कम हो जाता है. लेट्स टेक एग्जांपल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वुड हैव बीन 10,000 5,000. नाउ this specific word, I am just talking about this specific word. Please pay note of these words. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is on the debit side, and at the same time profit and loss appropriation account is also on the credit side. Now students, this profit and loss appropriation account is not something that you are not aware about it. I'll give you a rough idea about it. Profit and loss account, you all might have listened about it. Profit and loss account, financial statements, trading account, profit and loss, balance sheet. Profit and loss account is something which is included in P&L appro. P&L appro is a part, I'm still saying it, P&L appropriation account, profit and loss appropriation is a part of profit and loss account. Unless and until you don't prepare profit and loss account, you can't prepare profit and loss appropriation account.
profit and loss appropriation account is an account which is made or which is prepared not with the viewpoint of the partners. This entire partners capital account was prepared with what viewpoint? Partners viewpoint. Exactly. हम सब ने देखा कि ये पूरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के हिसाब से चल रहा है, सिर्फ पार्टनर्स की सोच है, सिर्फ पार्टनर्स की सोच. लेकिन if I am talking about profit and loss appropriation account, then this account needs to be prepared with the ideology of only and only business. P&L account prepare किया जाता है by the business for distributing the expenses and for receiving the incomes from the partner. Whatever expenses and whatever incomes the business needs to pay it out or receive from the partners is recorded in profit and loss appropriation account. And after doing that, they actually get the right amount of profit which can be distributed, which can be divided between the partners. Today we have studied about fluctuating capital method, in which you only need to prepare partners capital account, and the other most important account which will be prepared will be profit and loss appropriation account. I hope that you all will go through this video and you will actually like our video, subscribe our video, share our video. Please, in this critical scenario, I really want that you should share knowledge with everyone possible. Thank you.